Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Vikra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English grammar for class 7 and this is lecture number 31. My dear students, as you know, yesterday we learned the present perfect continuous tense, its definition and its sentence formation. And today we will do its book exercises. So kindly take out your books and open page number 22. Exercise A of present perfect continuous tense on page number 23. Fill in the blanks with correct form of the verbs to make present perfect continuous tense. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और हमें इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है. एंड वी नो दैट वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म. क्या होती है? जो भी वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वर्ब है कमिट, तो ये क्या होगा? कमिटिंग. ठीक है, द नेक्स्ट इज अर्न, तो इट विल टर्न इनटू अर्निंग. देन प्ले, प्लेइंग, डिलीवर, डिलीवरिंग, वर्क, वर्किंग. ठीक है, ये तो हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब देख ली कि ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे इन्होंने जो भी वर्ब दिया है, कमिट, अर्न, प्ले, डिलीवर, वर्क, हम सब इसको किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में. ठीक है, ये कमिटिंग होगा, अर्निंग, प्लेइंग, डिलीवरिंग, वर्किंग. ऑलराइट, और उसके बाद फिर नाउ वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ठीक है, अब हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट होगा. अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन्स होंगे तो हम क्या यूज करते हैं? हैव बीन. और अगर सब्जेक्ट हमारे पास होंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन तो वी यूज हैज बीन. ऑलराइट, ठीक है. द फर्स्ट वन इज द क्रिमिनल. इट्स अ सिंगुलर नाउन, तो व्हाट वी विल यूज हैज बीन with the criminal. The criminal has been. Alright, the next we have the poor widow. Poor widow is also a singular noun. ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? Has been. The poor widow has been earning. ठीक है, the next we have they. It's a plural, so क्या हो? ये plural है, तो इसके साथ क्या आएगा? Have been. They have been playing. Next is Arsalan. It's misprint here. It's Arsalan. Arsalan is a singular noun. तो Arsalan के साथ क्या आएगा? Very good. Has been. Arsalan has been delivering. ठीक है. And last one is some laborers. कुछ मजदूर. अब ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? Have been. Some laborers have been working. All right. Now I will show you the answers. Here is the solution of exercise A. The criminal has been committing serious crimes since 1999. Number 2. The poor widow has been earning her living by sewing clothes since her husband's death. Number 3, they have been playing hide and seek for 2 hours. Number 4, Arsalan has been delivering speeches against terrorism for many weeks. Number 5, some laborers have been working in the countryside since dawn. Okay, now let's do exercise B.
Exercise B is change the following sentences into negative. And you know very well how to make negative sentences. We just need to put not after have or after has. ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ not प्लेस करना है कहाँ पर, have के बाद या फिर has के बाद. I will solve one for you and the remaining will be your homework. They have not been collecting stamps since the beginning of the year. ठीक है, और in the same way you have to do 2, 3, 4 and 5 yourself, and this is your homework. Okay, now turn the page for exercise C. Exercise C, change the following sentences into interrogative. You know very well how to make interrogative sentences. I taught you in the previous class. आपको अच्छे से पता है कि interrogative sentence कैसे बनाते हैं. हम क्या करते हैं, जो भी helping verb है उसको starting में ले आते हैं और subject के उसके बाद. For example, the principal has been announcing the result for 1 hour. तो क्या होगा, has the principal been announcing. ठीक है, been अपनी जगह पे रहेगा, has जो है वो starting में आ जाएगा. Has the principal been announcing the results for 1 hour? Next, I have been living in Karachi since 2006. So what we will do, we start the sentence with have. Have I been living in Karachi since 2006? Next, the discipline in charge has been warning the latecomers since 8 o'clock. अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द डिसिप्लिन इन चार्ज और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन. तो हम हैज़ को पहले ले आएंगे. हैज़ द डिसिप्लिन इन चार्ज बीन वार्निंग द लेट कमर सिंस 8 o'clock. ऑलराइट, नेक्स्ट, ही हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस 4 o'clock. What will be the interrogative sentence? Has he been calling you since 4 o'clock? And you know, we put the question mark in the end of the interrogative sentences. Alright, I will solve 1 or maybe 2 for you. The remaining will be your homework. Number 1, has the principal been announcing the results for 1 hour? Question mark. Number 2, have I been living in Karachi since 2006? Question mark. Alright, now in the same way you have to do 3, 4 and 5 yourself. Next exercise is exercise D. Translate the following sentences into English. ठीक है, अब ये जो जुमले यहाँ दिए हैं आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. नंबर 1, बच्चे शाम से इंतज़ार कर रहे हैं. Children have been waiting since evening. Next, हम सुबह से अपने दुपट्टे नहीं रंग रहे हैं. We have not been dyeing our dupattas since morning. Okay? Next is, क्या वो हमें 1 हफ्ते से दावत पर बुला रहे हैं? You know, it's an interrogative sentence. क्या वो हमें 1 हफ्ते से दावत पर बुला रहे हैं? Have they been inviting us for a week? Have they been inviting us for a week? Next, वो गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया भर में तबलीग इस्लाम कर रहे हैं. ठीक है, they have been preaching Islam around the world for many years. They have been preaching Islam around the world for many years. And the last one is, आप 2 घंटे से हमारी बात बड़े सब्र व तहम्मुल से सुन रहे हैं.
You have been listening to us for 2 hours with great patience. Okay, now look at the board for translated sentences. Translated sentences of exercise D. Children have been waiting since evening. Number 2. We have not been dyeing our dupattas since morning. Have they been inviting us for a week? Number 4. They have been preaching Islam around the world for many years. Number 5. You have been listening to us for 2 hours with great patience. Okay, now you have to do all these 4 exercises in your book. Okay, that's all for today. Assalamu alaikum.